अनाउंस हुआ कि इंडिया पाकिस्तान मैच तो न्यूयॉर्क में होने वाला है. टिकट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू बैलेट, तो बैलेट में नाम डालना होता है, फिर मिल सकता है. न्यूयॉर्क में स्टेडियम अभी बना नहीं है, पता है तेरे को? नहीं नहीं, बना अभी नहीं एक है. विजन है कि यार बनेगा बोल के, राइट. मोस्ट मैचेस यूएस टाइम पे चलेगा, but अगर इंडिया, व्हेनेवर इंडिया प्लेज, दे विल ट्राई एंड अलाइन इट टू इंडियन टाइम, मेरे को लगता है. अगर आईपीएल को बेंचमार्क रख रहे हैं तो काफी लोग जो रोल प्ले करेंगे वो पोटेंशियली हम आईपीएल में एक्चुअली देखेंगे. I didn't expect Mumbai to announce Hardik as captain for this season. The last season, before the auction, big auction, Hardik is so desperate that he wants it right now, या uh, and which is not a good sign for somebody who wants to be a captain in general. But ईशान किशन आई थिंक वो अटक गया ओपनिंग के इसमें, और देर आर यशस्वी के आने के बाद वो थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया. बट आई डोंट सी सिराज स्क्वाड में आएगा. अगर तू एक्स्ट्रा स्पिनर लेता भी है, बिश्नोई क्यू, why not the forgotten guy चाहल? इंडिया में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बॉलर्स को होता है, नॉट बैट्समैन को, बिकॉज इफ Kohli, right? If his form goes from a little dip in form, we can't drop him that easily, like we are dropping Chahal. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नाइट वॉचमैन पॉडकास्ट. आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में. T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज और यूएस में होने वाला है, तो ये वर्ल्ड कप हम जैसे लोगों के लिए काफी स्पेशल है. यहाँ पे यूएस में वर्ल्ड स्टेज की क्रिकेट देखने नहीं मिलती, तो ये पहली अपॉर्चुनिटी होगी यूएस में रहने वाले लोगों के लिए वर्ल्ड कप लेवल के क्रिकेट मैचेस को देखने के लिए. आज हम स्पेसिफिकली इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे. ये जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैन चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली इंडिया अफगानिस्तान के सेकेंड T20 मैच के बाद हो रही है. तो हमें ये पता है कि काफी टाइम है बिटवीन नाउ एंड द वर्ल्ड कप. और यही नहीं, सिर्फ इंडिया एज अ टीम एक और T20 मैच खेलने वाला है, उसके बाद आईपीएल है और उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू होगा. तो काफी टाइम है बिटवीन नाउ एंड द वर्ल्ड कप, बट एट द सेम टाइम ज्यादा क्रिकेट नहीं है. T20 क्रिकेट, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट नहीं है फॉर टीम इंडिया. सो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. इस कोशिश में मैंने आज इनवाइट किया अपने दोस्त प्रसाद प्रभु को. प्रसाद और मैं एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, हम मिले भी क्रिकेट के थ्रू हैं. हम दोनों ही अपना अपना स्क्वाड पिक करेंगे एंड देन देखते हैं हमारी विचारधाराएं कितनी मिलती है. आई एम श्योर इस पे डिबेट होगी, काफी प्लेयर्स पे डिबेट होगी. आई एम श्योर हम इस दौरान आईपीएल को टच करेंगे, मेजर लीग को टच करेंगे, काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. तो विदाउट फर्दर अडू, मैं अपने दोस्त मिस्टर प्रसाद प्रभु को स्टेज पे बुलाता हूँ. पीपी भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया. क्या विचारधारा बोला मेरे को, मैं अभी डर गया कि यार क्या बोलना है. अरे टेंशन मत ले यार, वो ऐसे ही वर्ड निकल जाता है, टेंशन नहीं लेने का. चलो देखते हैं. हेलो एवरीबॉडी. पीपी, प्रसाद प्रभु पीपी बोलते हैं हम इनके. तो मैं और पीपी पीपी अभी बॉस्टन में है, मैं डालस में हूँ. हम ऑब्वियसली क्रिकेट के थ्रू मिले. हमने साथ काफी साल क्रिकेट खेली है. पीपी बड़े नामी गिरामी ऑलराउंडर है, तेज गेंदबाज और बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं. तो पीपी यार, बिफोर वी ज्यादा हम बात करें, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो यार. हाँ श्योर भाई, तू ही इंट्रोडक्शन करे. मैं इतना तेज डालता हूँ, इतना इंतजार कर रहा है कि यार आई कांट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट वेल. बट मैं बॉस्टन में रहता हूँ, लाइक कमली ने बताया. एंड या तुम्हें मेरा नाम. देख, तूने मेरे को पीपी बताया, मैं तेरे को कमली बता रहा हूँ. तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल भाई. सो हाँ, कमल कमल जी. नहीं नहीं, वही ठीक है.
मैंने इंडिया के लिए 30 टेस्ट मैच खेला है, 20 वनडे खेला है। बड़े तेज मेरा गेंदबाज हो तुम। मेरा नाम वेंकटेश प्रसाद है। नहीं भाई, मैं वेंकटेश प्रसाद कोई नहीं हूँ, कोई इंटरनेशनल नहीं खेला है, ऐसे लोकल क्लब क्रिकेटर हूँ। बचपन से टेनिस बॉल और लेदर बॉल ऐसे ही खेलता आ रहा हूँ। बट क्रिकेट, हाँ, क्रिकेट इज ऑलवेज अ पैशन। बचपन में ऐसे ही याद है कि यार जब शेड्यूल बनता है कि यार आज क्या करना है, फर्स्ट होता था कि यार 5 बजे क्रिकेट खेलना है, उससे फिर बाद डिसाइड होगा कि यार पहले क्या करना है, होमवर्क करना है, उसके बाद क्या करना है। सो आई थिंक इट्स द केस विद मोस्ट पीपल हु ग्रू अप इन इंडिया। बट कमल, हैप्पी टू बी हियर। बात करते, विचारधारा करते एंड डिस्कस दिस स्क्वाड। पीपी, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये वर्ल्ड कप हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल है। यूएस में, वेस्ट इंडीज में मेन मैचेस है, आई मीन टूर्नामेंट के स्केड्यूल आ चुका है। पहले तो 2 मिनट थोड़ा इस पे बात करते हैं यार। हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस वर्ल्ड कप? कुछ प्लान्स है मैचेस देखने के? क्या है तेरा? यू नो एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बताया कि मैं बॉस्टन में रहता हूँ कि, और अभी अनाउंस हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान मैच तो न्यूयॉर्क में होने वाला है, विच इज़ 3 आवर्स फ्रॉम हियर। वो लॉन्ग आइलैंड में होगा, विच इज़ क्लोजर टू बॉस्टन। तो डेफिनेटली मैंने तो मेरा बैलेट में नाम डाल दिया है। और बैलेट, अच्छा। तो टिकट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू बैलेट, तो बैलेट में नाम डालना होता है, फिर मिल सकता है। और मेरा एक अच्छा स्टोरी है इन विद बैलेट्स। सो मैंने लास्ट बैलेट डाला था अबाउट 13 years ago, इंडिया श्रीलंका वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए, वानखेड़े में। और अच्छा। मेरा सिलेक्ट हुआ था तभी, और मैं गया था देखने वर्ल्ड कप फाइनल जब धोनी ने लास्ट 6 मारा था ना। था मैं तो तू आई एम, तू था वहां पर? हाँ, मैं स्टेडियम के अंदर था। तो मैंने क्या? 3-4 ईमेल एड्रेस के साथ रजिस्टर किया था। तो मेरा 2 ईमेल एड्रेस पिक हुआ, फिर मेरे को आई थिंक 4 और 5 टिकट्स था मेरे पास। इट वाज लाइक 20,000 रुपीस उस टाइम पे। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और हम चले। तब व्हेन वी गॉट द टिकट्स, व्हेन वी हैड टू बुक द टिकट्स, ये नहीं फाइनलाइज था कि यार कौन फाइनल खेल रहे, तभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया हाँ, हाँ, सेमीफाइनल हाँ। चल रहा था। फिर धोनी का टिकट बुक नहीं हुआ था, हम लोगों का हो गया था तब तक बॉम्बे। हम वी आर प्रे कि यार मेरे को पाकिस्तान श्रीलंका नहीं देखना है फाइनल्स बॉम्बे जाके। तो बट या यूएस का, कमिंग बैक टू यूएस, वेरी एक्साइटेड। हाँ, ह्यूस्टन में, न्यूयॉर्क में और मायामी में होगा। भाई डैलस में। सॉरी, भाई डैलस, डैलस में डैलस, ह्यूस्टन नहीं सॉरी बोलो सॉरी, यार, मेरे घर के बाजू में। गलती हो गई मुकबली। डैलस में नया स्टेडियम जो बना है आजकल, जो मेजर लीग क्रिकेट चल रहा था उधर, तो या उससे याद आया कि यार न्यूयॉर्क में स्टेडियम अभी बना नहीं है, पता है तेरे को? नहीं, नहीं, बना अभी नहीं एक है। विजन है कि यार बनेगा बोल के, राइट? So yeah, so it's very, I mean, very excited for that specific match. But one of the things we miss, see, being here in US की IPL जाके देख नहीं सकते। There are not many cricket matches happening with that international quality ना। तो अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो बहुत excited. Like I said again, या India Pakistan is a big one for us. एंड यू राइट, कुछ विजुअल्स आए थे बीच में न्यूयॉर्क का, जहाँ पे जो ये लोग इन्विजन कर रहे हैं, जनवरी चल रही है, इट्स ऑलमोस्ट मिड जैन, मैच इज scheduled फॉर मिड, whatever, अर्ली जून, मतलब 5-6 महीने। बट मैंने ये भी सुना है कि they're going to basically get a portable stadium. So it's I Correct. don't know how it will work, but basically उठा के वो स्टेडियम वहां डालने वाले हैं, and that's how Correct. it is going to be. I think it's called modular stadium or something like that. तो Hmm. this is apparently common. बहुत sports में, F1 में या Yeah. FIFA में and all, they do this. So hopefully things work out and they do it. But हाँ, Yeah. 2 महीने में रेडी होना चाहिए वो। मेजर लीग लास्ट ईयर चालू हुई। आई नो दिस इज वर्ल्ड कप के बारे में, मैं 2 मिनट यूएस का सेंट्रिक बात करते हैं। आई डोंट नो, मैंने यार मेजर लीग, आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ Yeah, मेजर लीग। जो टैलेंट था काफी अच्छा था, और मैं, मेरे तो घर के बाजू में, तो मैं 5-6 मैचेस देख के आया। द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन वाज सरप्राइजिंगली वेरी गुड। प्लेयर्स, लाइक, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर्स, गावस्कर कमेंट्री कर रहा है ये। I didn't expect that, but I was, for the first year was pretty impressive. I don't know. What do you think about Major League?
Yeah, so even I was taken by surprise. मैंने भी follow किया. मैंने I couldn't go to any stadiums in person, but Yeah, टीवी पे देख रहा था कि यार एंड्रे रसल और कौन सुनील नारायण. आई रिमेंबर सुनील नारायण उधर इंग्लैंड में खेल रहा था और ही वाज शटलिंग yeah. बैक बिटवीन मेजर लीग एंड दिस, सो इट्स ही फेल्ट दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड निकोलस, आई थिंक फाइनल का मैच निकोलस पूरन ने, आई थिंक ही जस्ट, वाज इट मुंबई, डिड ही प्ले फॉर मुंबई? Am आई I, सेड am I, इंडियंस. am I, या सॉरी am I, सॉरी. and am I New York or Seattle or Coast? Correct, correct. So that was उनका like, था। I think, blinder of an innings, right? So हो गया। मैं देख रहा था यार 24-2 या 24-3 हुए थे वो लोग, एंड देन ही केम एंड हम्म, जस्ट टुक ऑन बॉलर्स एंड बढ़िया था. आई थिंक इट वाज वेरी इंप्रेसिव टू सी. या आई डिडंट एक्सपेक्ट यूएस में इतना हाई क्वालिटी क्रिकेट होगा, बट गुड टू सी टॉप क्रिकेटर्स कमिंग हियर या एंड प्लेइंग. मैंने एक्चुअली वो मैच देखा, फाइनल देखने गया था ना। ओके. काफी काफी इम्प्रेसिव था, और उसका निकोलस पुरान का इनिंग्स तो it was special, 130 odd, yeah, 60 50 60 balls में, और he was clean hitting, वंस इन अ लाइफ टाइम, you वंस इन अ know, लाइफ टाइम. once in a lifetime. But anyways, ML Major League का तो बात करेंगे. I'm sure we will talk about Major League in time. But let's turn our attention to our India potential World Cup squad. But before we get to the World Cup squad, एक important चीज है कि इंडिया का ज्यादा मैचेस नहीं है बिफोर द वर्ल्ड कप, लाइक T20 मैचेस नहीं है. आई थिंक दी ओन there's one अभी जो ongoing सीरीज है अफगानिस्तान की. By the way, we are recording this after the second T20 between India and Afghanistan. So एक T20 मैच बाकी है as a team, and then they go on to IPL, right? So IPL basically, BCCI के लिए IPL is a yardstick for them to pick a squad, your T20 World Cup squad. So, काफी interesting, journey रही है IPL की, that people have actually now started relying on IPL for people to get into India team, various things. So we'll move on. We'll move on to our main topic of discussion, which is picking a squad. So PB, एक काम करते हैं यार. We'll divide this into four segments, right? We'll pick batsmen, all rounders, wicket keepers, and then bowlers. So why don't you go ahead, PP? तेरे, so what we are doing is we'll try and pick a 16-member squad, right? So again, number is up to you. So why don't you go ahead? तेरे batsman बता, कौन है तेरे batsman? Sure. Given my 30 test match history, I'll go first. Senior भाई वाले बोला कि थे। भाई सिलेक्टर बनने के लिए आई थिंक यू हैव टू प्ले मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट मैच एंड ऑल्सो आई क्वालिफाई. आई डोंट नो इफ यू क्वालिफाई फॉर दैट. मेरा भाई कम से भाई, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ इसलिए मैं क्वालिफाई. चल, तूने खेल लिया ना, तो पिगी बैकिंग ऑफ यू. भाई कमली, मेरे को इससे याद आया कि अब मैंने तेरे साथ एक गेम खेला था जिसमें तू 50 बॉल में 5 रन था, तो टेस्ट मैच खेला है तू. वो मैच जीते थे, वो मैच जिताया था. जीते, जिताया था. करेक्ट 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 करेक्ट. जीता, सामने अपना भाई था आशीष. या अभी तू बोल रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट 129 टू विन था 40 ओवर में. 79 for 7, और एक रिटायर्ड हेड बंदा था. या मैंने पहले 30 बॉल में 0 रन पे था मैं, और टू बी एग्जैक्ट मैंने 53 बॉल्स में 11 रन बनाए, वो भी लास्ट पे एक चौका मारा करके मेरे 11 बने. और सामने मेरा भाई आशीष 28 में 28 मार के बोलता है तू खड़ा रह, तू आउट नहीं होना. मैं मेरा बैट पे बॉल नहीं लग रहा है, आउट कहाँ से होगा. दे यार, बहुत बढ़िया गेम था वो. इट वाज गुड फन. But या anyways, या coming back to our squad, या so so मैं 16, I'll tell the names of 16 people. So first batsman. स्टार्ट बैट्समैन. या Batsman. Obviously, I think most of the names will be obvious. There is no surprises here. But Rohit, uh, Shubman, Yashasvi Jaiswal, Virat Kohli, uh, Surya, Apna Sky, where Rinku Singh. I go with six ओके. batsmen. I mean, ओके. six batsmen, and then उसके बाद all rounders पे आते इंटरेस्टिंग. हैं. एक मिनट, मैं अपना 6 बैट्समैन बता देता हूँ. हाँ. Right, I'll tell you my not six. I'll tell you my batsmen because I've picked seven. Okay. So again, there is going to be overlap. So Rohit है, Mm-hmm. यशस्वी है, Mm-hmm. विराट है, Mm-hmm. शुभमन है, रिंकू सिंह है, सूर्या है. So यहाँ तक तो हम दोनों मैच करते हैं. But I picked
Tilak Verma as a seventh batsman. So Interesting. before we move on to all-rounder, ए, एक तो तिलक वर्मा पे बात करते हैं कि आई टेल Hmm. यू व्हाई आई थिंक द रीजन आई पिक सेवन मैंने सात इसलिए लिए कि आई थिंक एक तो इंडिया को तिलक वर्मा लेफ्टी है टॉप में आई थिंक यशस्वी ओपन करेगा अगर ऑब्वियसली ये सब 5 महीने में पहले बात कर रहे हैं हम फॉर्म बड़ा मैटर करेगा आईपीएल का फॉर्म बट यू नो होपफुली ही मेंटेन्स द फॉर्म यशस्वी ओपन करेगा ठीक है इंडिया को रिंकू और तिलक इफ तिलक वर्मा मेरे हिसाब से तिलक वर्मा कहीं नंबर 4 पे खेलेगा मेरे हिसाब से और रिंकू 6 या 7 पे तो वो एक लेफ्ट हैंडर आ जाता है तो यू हैव यशस्वी फिर तिलक और फिर पोटेंशियली रिंकू तो एक लेफ्ट हैंडर्स थोड़ा आई थिंक टीम को बैलेंस पोटेंशियली दे सकते हैं तो वो एक रीजन है तिलक वर्मा का और हिस्टोरिकली इंडिया हैज स्ट्रगल्ड विद देयर बैटिंग कि अगर उनका टीम का फॉर्मेशन इफ दे डोंट हैव गुड इनफ बैट्समैन डीप नहीं जाते हैं ना तो वीव सीन दिस हिस्टोरिकली बट एनीवेज दैट तिलक वर्मा एक तो अच्छे फॉर्म में है आईपीएल में अच्छा किया है उन्होंने आई थिंक टेम्परामेंट अच्छा है इट्स नॉट दैट ही इज ऑल स्लॉग ही कैन dig you out of a hole basically. So that is my reason of having seven batsmen. But PP, 6 batsmen क्यों तेरे स्क्वाड में? 6 batsmen क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक तिलक वर्मा इज इफ एट ऑल आई हैड अनदर बैट्समैन तिलक वर्मा होता वो बट एंड लास्ट 2 साल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है जैसे तूने बताया कि आईपीएल में ही इज ऑलमोस्ट टर्म्ड एज नेक्स्ट सूर्या फॉर मुंबई Yeah, इंडियंस yeah, बट I don't see Tilak fitting into. I know we're not discussing 11 abhi, yeah, but yeah, yeah. 11 में number 4 में you told as an example Tilak Verma, right? Hmm, कि यार hmm, कहाँ there is Surya, Kohli, Rohit and some other opener Jaiswal or Gill रहेगा top 4 में. He'll has to come later on after that. And most of our batsmen don't ball. I don't, and that's big problem for India. बहुत सालों से we always talk about our glory years in during Tendulkar, Ganguly and all that years, right? उसमें hmm. टॉप 6 बैट्समैन में आपको 2-3 बॉलर्स पार्ट टाइम बॉलर मिल लेते हैं मतलब सहवाग बिल्कुल. बड़ा बॉल 3-4 ओवर्स टेंडुलकर गांगुली बट अभी कोई नहीं है एंड आई डोंट वांट अनदर Hmm. बैट्समैन who also doesn't ball. So that is the Tilak big actually reason why ball. Tilak Tilak, actually ball. Tilak balls so that Kohli also balls. So no. With due respect to Tilak and his talent, but Okay, okay. Now actually, I get it. Point नहीं है. but it's a big point कि मैंने दिनेश कार्तिक का एक सुना था कि यार वनडे में being a bowler versus T20 में bowler is two different things because T20 every ball is counted as an event. So there is 120 events in Correct, an innings. You correct, and match can get swayed in one way if the three balls go correct, for 6 and 18 runs gets added. It's gone, right? So correct. that's why you don't get too many part-time bowlers playing in T20 as much as I explained. कि यार वो जमाने में Tendulkar, One day Ganguly, में. Sehwag था. That's all one day, right? So that's the big point. But yeah, that's the reason why I don't have a seventh batsman. ठीक है. Perfect. Fair enough. एक और चीज ऐड करूंगा मैं. While both of us have Shubman Gill, right? And I think he will be in the squad. But and I know we are not talking about the 11, but do you actually see शुभमन गिल 11 में फीचर करते हुए तू तू देख पाता है? और अगर जस्ट थिंक अबाउट इट कि कहाँ पे अगर शुभमन गिल खेलेगा कहाँ पे खेलेगा? क्योंकि यशस्वी रोहित ओपन विराट वन डाउन शुभमन टू डाउन नंबर 4 पे So this Shubman is in form of his life IPL में last year. I think purple cap जीता था शायद करेक्ट उसने. करेक्ट So not having him in 11 is very tough. But where to fit him is the big वेयर टू question. फिट इन So in जहाँ मैं देखता हूँ कि if he doesn't open, he doesn't play because while he's an accomplished player, he's got good strike rate. नीचे आके we need that muscle like Surya or somebody. Even sometimes
people question Virat को भी नीचे नहीं खेलना चाहिए, open करना चाहिए because he doesn't accelerate that fast, right? And Correct, Gill is correct. almost like in the Virat mold of accomplished player, ज़्यादा slog नहीं करेगा, boundaries पे ज़्यादा rely करेगा initially and all that, right? So that's why Gill को नीचे मुश्किल है. अगर Gill fits in the 11, it's opening. Otherwise, unfortunately, not in the 11. He'll not play. So basically, if Gill is like the third opener. He'll, अगर कोई इंजरी होती है तो Gill is the backup. yeah. So like we discussed, हम लोग ये 5 महीने पहले record कर रहे हैं, and right now as it stands, Jaiswal over Gill, but depends on Yep. IPL form. If Gill has another purple cap, I'll be tempted to do Gill over Jaiswal. Okay. Okay. ये एक एक जस्ट मेरे दिमाग में यही थॉट आया था कि इट ऑल डिपेंड्स राइट सिलेक्टर्स कैसे सोच रहे हैं Yeah, राइट इफ द सिलेक्टर्स से कि यार शुभमन गिल एंड होप आई थिंक ये इसके आंसर्स आईपीएल में मिल सकते हैं if the selectors or the team management is saying भाई शुभमन गिल we want you in the team but maybe number 4 अगर ऐसा मैनेजमेंट का थॉट है आई थिंक we'll find out in IPL because they may ask them to actually play that role in IPL because उसी पे जज कर रहे हैं ना सो इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि आईपीएल में क्या होता है यार कि correct. आईपीएल में अगर शुभमन गिल इज स्टिल ओपनिंग और वो स्क्वाड में आ गया तो ही इज गोइंग टू बी द थर्ड ओपनर क्योंकि स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड राइट हैंड चाहिए तो एक एक ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है क्योंकि अगर आईपीएल को बेंचमार्क रख रहे हैं तो काफी लोग जो रोल प्ले करेंगे वो पोटेंशियली हम आईपीएल में एक्चुअली देखेंगे Exactly. No, फॉर द स्क्वाड that's a very good point. So, Shayad depends on where he plays in IPL, but Gujarat, where he plays for now, he's a captain of the team. So, and he has got a stellar innings last year. So, मेरे को या doubt है कि Ashish Nehra was the coach of Gujarat, and he will decide for him to play lower just because Indian team wants him to play lower because they have to see after Gujarat as well, the IPL team. So difficult, but I agree कि there'll be some signals gone from Rahul Dravid and the management to the IPL teams here. We see this player playing in this one. For example, Kohli cannot open, so there is no point him opening in for RCB, right? If that's what it is. But I don't know with करेक्ट Kohli, accomplished player, Rahul Dravid will have a say so much, but they'll try and make a request to IPL teams. मेरे को लगता है. करेक्ट करेक्ट एनीवेज सो ये अपना बैट्समैन हो गए ऑलराउंडर्स पीपी तेरे ऑलराउंडर्स कितने और कौन कौन पहले तो ऑलराउंडर इंडिया में ज्यादा है ही नहीं. They select themselves mostly. so या so the biggest all-rounder is Hardik Pandya, who is also my vice captain. ओके Um, ऐसे न्यूज आया मेरे को कि न्यूयॉर्क में ऑलरेडी पोस्टर्स लग गए कि शाहिन अफरीदी और हार्दिक पांड्या का एज इफ इज कैप्टन. So that are all because of Mumbai Indian confusion, I guess. But Hardik Pandya is one. Ravindra Jadeja picked themselves up both, and then third is Akshar Patel, who is mostly backup for Ravindra Jadeja. But or if you want another batsman at number 8, these are the three people: Hardik, Jaddu, and Akshar. All three Guju boys. Could you voice I mean all-rounders जैसे तुम बोला यार the all-rounders do pick themselves तो मेरे भी और 3 all-rounder है तीनों वही है the only difference is I don't have Hardik as my vice captain but I'll come to my vice captain हार्दिक यार अगेन एक इंटरेस्टिंग केस है हार्दिक 2 मिनट हार्दिक पे बात करते हैं राइट काफी न्यूज में रहा है हार्दिक बिकॉज ऑफ जो भी हुआ है विद आईपीएल गुजरात के साथ गुजरात ने रिटेन किया फिर मुंबई ने उसको ट्रेड में खरीद लिया फॉर अ record डील एंड ऑल दैट बट उसके बाद बहुत न्यूज चालू हुई है हार्दिक के बारे में राइट ड्रिफ्ट्स बिटवीन रोहित एंड हार्दिक लाइक हाउ वुड रोहित हाउ कैन रोहित को कैसे ट्रीट किया जाएगा क्योंकि I've seen MI का पोस्ट इंडिया इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ है एमआई ने पोस्ट डाला आई मीन रोहित इज द कैप्टन दे बेसिकली रिमूव्ड हिम फ्रॉम द पोस्ट और बाकी लोगों को डाला केएल राहुल को फोकस में करके डाला है दे डिडंट इवन कंसिडर रोहित शर्मा सो डायनामिक्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग द रीजन ऑल्दो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीएल की आईपीएल में अब रोहित विल प्ले अंडर हार्दिक इफ ही इज फिट again that is the big if right if he's fit but 1 minute assume karo he is fit he's going to play
रोहित विल प्ले अंडर हिम, और वो मैनेजमेंट में क्या अंदर चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, बट उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया के इस पे गिरेगा। आई मीन, आई नो दीज गाइज आर प्रोफेशनल, वो हद तक आने नहीं देंगे, बट अल्टीमेटली ह्यूमन नेचर है यार। तो पीपी, क्वेश्चन आई गेस ये है कि ये जो भी हुआ है लास्ट एक डेढ़ महीने में विद आईपीएल, डू यू एक्चुअली सी एनी इम्पैक्ट बिटवीन Hardik and Rohit का relationship, or do you think this is purely professional? या बहुत बहुत न्यूज़ है लास्ट 2 महीने में। आई Yeah. डिडंट एक्सपेक्ट मुंबई टू अनाउंस हार्दिक एज कैप्टन फॉर दिस सीजन। The last season before the auction, big auction, Yeah. and मैंने सोचा कि यार रोहित will be captain, but surprising move by मुंबई। जब विराट कोहली was captain of India, and he captained India for 6 years, 6 साल किया ना उसने। Yeah. Yeah. जब न्यूज़ आया था कि यार विराट कोहली might step down and they asked to step down and all the controversy, मेरा first thought कि यार how can Virat play under any captain? Virat to ek this alpha male personality. There is no way he's going Correct. to play. That too against under Rohit, who he seemed to have rift during 2019 World Cup. I don't know if you know, जो मैनचेस्टर में जो Yeah. हारे Yeah. थे इंडिया न्यूजीलैंड, उधर स्टोरी था कि यार रोहित और कोहली नहीं चल रहा था and all that, right? So I didn't expect to happen, but looking back in the last 3 years, Kohli is doing well, and they seem to be getting along really well. Whatever Hmm. अनबन हुआ एक महीने 2 महीने का हो गया होगा, but so what I'm trying to say here is, given that example, this one also I expect people to first have that emotions flying all left right center in the initial 2 months. Uske Yeah. baad Rohit is not even like a Virat in sense that he doesn't he's not like the alpha male character, and he'll play along, easy to get along with guy kind of vibes aata hai. Not that I Hmm. have spent time with him, but You played 30 test matches, but 30 my test matches were in 90s with playing Amir Sohail को बोल्ड किया ना मैंने। अच्छा. But yeah, I think, Okay. but yeah, I don't think there'll be too much of a thing to consider, to be worried about, and they will handle it. But though many, I think there'll be some friction, but I think over a period of time it'll get okay. Yeah. Hopefully that is the case. It is just people talking and making things up, right? But yeah. Yeah, but I don't even know why did they do all of these unnecessary things. It's just creating. Hardik could have moved after 1 year. Even if he moved it, he could have become captain after 1 year. Only thing is Hardik is so desperate that he wants it right now, Yeah. uh, and which is not a good sign for somebody who wants to be a captain in general. But anyway, hopefully everything is good and doesn't impact Yep. India's performance in World Cup. That's In the that's the World main Cup, topic. Yeah. most Mm. importantly, वो impact नहीं हो. But let's actually move on to wicket keepers. Wicket keepers बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी बात करने लायक काफी कुछ है, बट पीपी तेरे विकेट कीपर्स. विकेट कीपर्स तूने बताया ना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया में विकेट कीपर्स आफ्टर लाइक 15 years of IPL we don't have a wicket keeper of Dhoni's quality in T20. Yes, we have KL Rahul, Ishan Kishan, Sanju Samson. I'm not talking about keeping, but their batting skills in T20. करेक्ट. तो देखेगा उनका सबका स्ट्राइक रेट इन T20s, राइट, इन इंटरनेशनल्स इट इज 125 130 वो रेंज पे आता है, and typically they come after 5 6 7. Oh, it doesn't like KL Rahul. I think he has less than 130. Sanju Samson last 10 साल से ट्राई कर ही रहा है बेचारा, but Ishan Kishan also he's got success in one days as an opener, but T20 पे नहीं है. But anyway, Rishabh Pant, who's also like this big celebrated cricketer after the Perth Test match and all that. Even he's या. got some strike rate less than 120, 130 ish, somewhere like that, which is almost करेक्ट. like run a ball in T20 standards, right? So that's why it's very difficult कि यार किसको pick करे here, and it is so करेक्ट. tempting to say कि यार go with a fresh face like Jitesh Sharma, who just comes and just hits the ball Right. from ball one, right? And Yeah. that's why last World Cup, who played it? Dinesh Karthik, who's nowhere in the reckoning right now. But Yeah. we all of a sudden went to Dinesh Karthik because no keeper is playing
the aggressive role in T20. So, but anyway, having said that, the two I have picked is the best among what we have is KL Rahul, which is a little questionable because he's not played उसने T20 पता नहीं 2 साल से नहीं खेला है one T20I, that is internationals. Hmm, And second is Ishan Kishan, because he just seems like a player who can handle big stages even if he has not played a ton of international cricket. He feels like correct. he looks like a guy who can handle big pressure situations. Interesting. I know, recording चालू करने से पहले we talked about our squad. मेरे wicket keeper, at that point I was of the opinion, or we were of the same opinion, but actually मैंने भी, so I picked KL Rahul and Ishan Kishan, but I'm going to actually change and actually add Jitesh Sharma instead of Ishan Kishan, and I will tell you why. Because you made a good point and that made me think. Right? KL Rahul, again, ये IPL में काफी अपने को पता चलने वाला है. See, KL Rahul, I feel like KL Rahul is a number four, right? I know ODI World Cup में ये था. Obviously, he'll play a different role. Obviously, he has to be aggressive, right? It's not one day, so he has to be aggressive. So KL Rahul potentially has a position at four, right? But Ishan Kishan is an opener, right? अगर यशस्वी है, he's in form. रोहित है, whether he's in form or not, he'll be the captain, right? Where do you already have Shubman Gill as a backup? So Ishan Kishan कहाँ पे आता है? So that's what I think Jitesh Sharma, the role he plays, he's a good wicket keeper, right? Again, इसमें देख रहा था इंडिया अफगानिस्तान में, his keeping is decent, right? Obviously not to the level of a Dhoni, which will come with experience, but he is someone who comes in and taunts. He genuinely goes beyond 150 का strike rate पे आराम से जाता है बंदा. भले if he's there, see, and he is someone I think he could come in at like 6-7 or play that aggressive role. If you need a 200 का strike rate, 10 ball भी खेला, 20 run भी बनाया, I think he's done his job. So I'm actually going to go with KL Rahul and Jitesh Sharma just for the sake. And I picked Ishan Kishan, but then when I think about it, वो opening में there is already three openers, so Ishan Kishan को नीचे नहीं खिलाएंगे. He's not. He is a opener. So I think Jitesh Sharma and Ishan and KL Rahul are my two wicket keepers. But Yeah, what do you think about my last minute change? नहीं नहीं तो अरे यार हम कौन से सिलेक्टर है कि लास्ट मिनट चेंज हमको किसको यूएस भेजना है तो अपनी नहीं बट नहीं एक्चुअली बात करते करते जितेश शर्मा इज मेकिंग सेंस बट इट्स अ वर्ल्ड कप इट्स अ बिग इवेंट इमेजिन वी आर प्लेइंग फाइनल्स इन फ्रंट ऑफ 40,000 पीपल करेक्ट जितेश शर्मा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो एंड इट्स बिग बिग टूर्नामेंट्स आर टोटली डिफरेंट राइट अगर कुछ और टूर्नामेंट होता तो मे बी ओके यू कैन पुट जितेश शर्मा हेड इसलिए करेक्ट मैंने इवन केएल राहुल और ऋचा किशन बोथ द नेम्स दोनों नीचे नहीं खेलते T20 में they are not राइट number 4 or number 5 they have played down only in one day internationals right so Ishan Kishan has played a couple of innings for India I think in World Cup 1 or no not in World Cup before that at number 4 number 5 but Jitesh Sharma is tempting so that's why I say this is big this is one slot which IPL will have a big influencing factor कि देखेंगे कि यार कौन परफॉर्म करेगा it's don't know nobody like how we put Kohli या Hardik या Bumrah or Jadeja and all who pick themselves up our keepers don't they have to विकेट earn कीपर their में spot नहीं है वो because अभी तक. yeah that's the problem हाँ नहीं, बट एक है यार, फिर भी विकेट कीपर नहीं करते हैं, बट आई थिंक द जितना मैं ये ज्यादा सोच रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, आई थिंक जितेश शर्मा मेक्स लॉट ऑफ सेंस. आई नो, जो तूने बोला कि वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस नहीं है, बड़ा मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं, बट वहीं पे आईपीएल आता है, राइट? आईपीएल वो एक्सपीरियंस देता है. आईपीएल जितेश शर्मा, इफ यू लुक एट जितेश शर्मा, ही प्लेड लास्ट ईयर, he's played in stadiums with big crowd because of IPL. वो प्रेशर, ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल और वर्ल्ड कप फाइनल का कोई मैच नहीं है, राइट? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक वो क्राउड का प्रेशर, क्राउड का एक्सपेक्टेशन, राइट? वो बंदा एक साल से हैंडल कर चुका है, एक डेढ़ 2 साल से, 2 सीजन से,
And I think you're right. ये साल का IPL is going to be very crucial, especially India team के लिए crucial है. But I think जितना मैं बात कर रहा हूँ, जितेश शर्मा makes a lot of sense. जो उसका स्टाइल है, ये Yeah, स्पेसिफिकली जो वो रोल प्ले कर रहा है ना, एक तो कीपर है, बट देन वो 6-7 पे जो 200 के स्ट्राइक रेट पे जा सकता है ना, कैन गिव यू दैट 10 बॉल yeah, 20-25, yeah, right? He is making a lot of sense. ईशान किशन, I think, um, वो अटक गया ओपनिंग के इसमें, और देर आर यशस्वी के आने के बाद वो थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया. बट एनीवेज, सो केएल राहुल, ईशान किशन आर तेरे विकेट कीपर्स है, बट मेरा केएल राहुल एंड जितेश शर्मा विकेट कीपर है. हाँ. So, Jitesh Sharma, I think, is an interesting choice. Definitely, I think the 2007 World Cup India jeeta tha, half the people did not have any proper experience. So करेक्ट. that makes the case कि यार Jitesh Sharma को डालो. T20 is not too, don't think too much कि यार experience नहीं है and all that. But if you flip it, last T20 World Cup में Ashwin played the game. Okay, so and when Ashwin played a couple of games and one of it was India Pakistan, or and one ball 2 runs required. Or I don't know if you remember this. And ओ या. isn't it ball dala and he left it just like this. And and I don't know many people कि यार इतना pressure India Pakistan, एक ball 2 run चाहिए, you just swing the ball, right? तो करेक्ट. वो calm head था, इसलिए he just left the ball go and it went wide. And even now the people speak यार, how did he leave? मतलब इतना coolly leave नवाज, किया. Right, लेफ्ट Nawaz, आर्म था, correct. नवाज Nawaz जवान. spinner fast डाल रहा था, but he just left it. And even the last ball, he just chipped it over mid off and just coolly किया. So there are both sides of argument कि यार 2007 लिया तो experience की जरूरत नहीं है, just get people with young blood. But last करेक्ट. देखा जाए तो कि यार, and why I'm taking that example is Rahul Dravid, who's the coach of T20. I think he might go towards more experience than young blood. ऐसे मेरे को लगता है, या इसीलिए या. KL Rahul might get a blood, but who knows? Uh, There's a lot. yeah. That's why, although after your 30 and my zero test matches, it's difficult to imagine how it is for the actual selectors when they sit down. आसान नहीं है, Yeah, बिल्कुल आसान नहीं है. yeah. बट आगे बढ़ते हैं. Hmm. बॉलर्स, तो बेसिकली अब स्क्वाड आ गया है. 16 का स्क्वाड पिक करना था, तो मैंने भैया 12 पिक किए हैं, राइट. 7 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर और 2 विकेट कीपर, 12. तूने 11 पिक कर लिए, तो एविडेंट है कि मैं 4 बॉलर पिक करूंगा, तू 5 बॉलर पिक करेगा, Correct. राइट. तो स्टार्ट कर भाई, तेरे बॉलर्स बता. So I'm going with five bowlers, of which the obvious ones are Bumrah, or Arshdeep and Shami, ओके. and I'll go with Kuldeep as my only spinner because I have Jadeja and Akshar as the all-rounders, and the हाँ. last bowler is Siraj. So basically, out of the 5 pure bowlers, 4 are fast bowlers: Bumrah, Shami, Arshdeep, and Siraj, and then one is Kuldeep कुलदीप. for spin. And it's tempting. We can discuss ki why this, why not that, why not additional spinner and all that, because West Indies में खेल रहे हैं. It is not कि हम्म. it's not South Africa या Australia में खेल रहे हैं, हमको इतने fast bowlers चाहिए. But anyways, that's my 5. Let's see your 4 bowlers and then we can discuss. मेरे 4 बॉलर है मेरे पास. जसप्रीत, अर्शदीप, कुलदीप एंड रवि बिश्नोई. ये मेरे 4 बॉलर हैं, एंड मेरा वाइस कैप्टन इज जसप्रीत बुमराह, राइट. सो आई थिंक, आई मीन, जसप्रीत, अर्शदीप, कुलदीप सेम है. मैंने एक रवि बिश्नोई लिया है, विच इज अ स्पिनर, एंड तेरे पास शामी है, सिराज है. अभी ऑब्वियसली दिस इज सब्जेक्टेड टू फिटनेस. शामी अभी इज गोइंग थ्रू Yeah, फिटनेस का. ही इज नॉट फिट, बट होपफुली yeah, ही विल बी फिट फॉर आईपीएल. ही विल प्ले आईपीएल. वो रिकवरी होगी, दैट इज द होप, राइट. बट अगर फिट भी है, आई डोंट. 2023 वर्ल्ड कप में बंदे ने पूरा, ही परफॉर्म्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. लाइक वो बंदा वाज ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट, तो उसमें कोई ये नहीं है, राइट. बट T20 एंड शामी ने लास्ट 2-3 सीजन अच्छा किया है गुजरात के लिए, बट आई डोंट सी हिम इन द T20 वर्ल्ड कप, एंड आई विल टेल यू व्हाई.
डेथ ओवर्स में शामी को होती है तकलीफ, कितना भी तो बोल ले, शामी को थोड़ी तकलीफ होती है, कैन बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, right? So if you have a Bumrah, if you have Arshdeep, and then hopefully Hardik, hopefully he is fit. You have these three fast bowlers, and you are playing in West Indies. So I think that is why मैंने दो ही fast bowler लिए, but Shami especially is an interesting case. He can be a little expensive, so that's why I did not even think about Shami. But Shami is a very interesting choice in your squad. Q, why Shami? So you have only two fast bowlers, that is Bumrah and Arshdeep. I think I agree कि But ये then दो जगह Hardik, हार्दिक इज ऑलराउंडर कैटेगरी में डालते हैं उसको. correct, correct, So the pure fast bowlers, these are two, and both are death correct, bowlers. correct. See, I mean, both are can ball around the any phase of the innings, but these Anything, are yeah, I think they are the only ones who can ball death as good as anyone else, because with their Yorkers and slower bouncers and all the बरोबर, variation. I agree कि बरोबर. Shami is not maybe in the death bowling ranking. Bumrah, Arshdeep, उतना नहीं and है, Shami आता है. But who is ठीक है. going to ball the initial overs, right? When the ball is swinging, and you do not, Bumrah can ball one in the first six or two, but you also want to preserve Bumrah for the last, as well as if the wickets don't go in the middle, right? So I want my somebody who can really ball बॉल स्विंग 140. किधर हो रहा है दीदी? वेस्ट इंडीज अगर बॉल स्विंग किधर हो रहा नहीं, I agree, इतना swing नहीं होता है, but I want somebody who can ball at 140 pace है? and हाँ, just not think about death. Okay, करेक्ट. and Siraj also for the same reason. I think Siraj is more expensive than Shami इसमें T20s में, but the only reason मैंने रखा है दोनों को is I feel uh, other than death, initial beach का inning, I mean first 6 overs and then उसके बाद भी चाहिए होगा. And yeah, I'll it see Shami's वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस इज वेरी टेम्पटिंग. और इट्स हम बोल सकते हैं कि यार इंडिया में कहाँ स्विंग होता है बॉल, इंडिया में कहाँ स्विंग होता करेक्ट. है, स्विंग करके बरोबर, दिखाया उसने. बरोबर. सिराज ने भी दिखाया और शामी ने भी दिखाया. अगेन वेस्ट इंडीज, इट्स नॉट दैट कि यार सडनली स्विंग होगा, हिस्टोरिकली नहीं हुआ है, एंड T20 में मुश्किल से स्विंग होगा. बट आई थिंक शामी लास्ट 3-4 years he has proved himself as T20 bowler गुजरात में specifically, and there are not too many death bowlers in India जो यॉर्कर डाल करेक्ट. सकते हैं. And Shami is knocking at that top two, where which is now Bumrah or Arshdeep, right? So I think that's the reason. I would I would have expected you to question more Siraj Q, not आ by रहा हूँ, उधर भी आ रहा Mukesh हूँ, and others, but उधर भी I आ रहा think हूँ. I think I don't know if I justified Shami's position, but I feel like he's done enough with last 3 years in T20 and maybe in other white ball cricket like World Cup in 50 over for him to deserve, maybe not in 11 as yet, but at least in the squad. बट आई थिंक लाइक शामी का रीसेंट परफॉर्मेंस, क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस तेरे डिसीजन को काफी इम्पैक्ट कर रहा है, राइट? एंड लुक, यू नो हाँ, T20 आईपीएल में अच्छा किया है शामी ने, राइट? लास्ट 2 सीजन्स में आईपीएल में काफी अच्छा किया है. बट लेटर ऑन एक और पॉइंट है जिसका पोटेंशियली आई लिंक बैक टू शामी एंड सिराज ऑल्सो. बट सिराज, आई डोंट सी सिराज स्क्वाड में आएगा. सिराज का मैं एक्चुअली रिकॉर्ड देख रहा था. आई थिंक सिराज ने 9 या 10 इंटरनेशनल गेम्स खेले, and he's picked up whatever is one wicket per match, but बहुत expensive रहा है. He is at like 9.5 runs. और not नौ T20 में से first six देखेगा ना अगर तू, look at his record, look at his first six. Obviously that was a while back, whatever 2017, 2018, but first 6 matches almost 10 साढ़े 10 रन पर ओवर ऑन एन एवरेज हर मैच में गया है. सो सिराज अगेन बहुत अच्छा बॉलर है. टेस्ट मैचेस में जो बंदे ने अभी किया है, वनडे में जो किया है, T20 में मैं वो देखता नहीं हूँ. सिराज का आईपीएल रिकॉर्ड उठा के देख ले, राइट? मैं एक्चुअली ये देख रहा था, राइट? 2017 में डेब्यू किया है, 2023 तक 6 साल खेला है. आई थिंक 2 सीजन ही रहे हैं, 6 में से 2 सीजन सिराज ने, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट आई थिंक 2021 का सीजन
he went at 6.5 runs per over, और 2023 का सीजन he went at 8.5 runs per over. उसके अलावा all 4 seasons he's been 9.5 plus, right? तो IPL numbers plus international में he's been very expensive. So I don't see Siraj in the squad also. But that's just numbers देख के भी form भी होती Yeah, है यार. But I yeah. don't see Siraj in the squad. Yeah, I think that position, I need a fourth fast bowler. Correct. उसके लिए कौन right Squad now में. yeah, form में IPL form will matter a lot. एंड सिराज को Correct. मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया क्योंकि मैं आरसीबी फॉलो करता हूँ आईपीएल में एंड आई हैव एवरी टाइम ही गिव्स 10 रन्स एन ओवर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है इधर। वो एक सिराज था, उससे पहले उमेश यादव भाई साहब रन दे दे के आईपीएल इतना खराब किया आरसीबी का। बट आई एग्री, लास्ट ईयर वाज he got better at death bowling because Siraj Yeah. हमेशा balls really well in the top 6 डेथ में, तो कुछ भी तकलीफ कर, होती है. 6 मतलब he goes for 10 11 12 runs and over and yeah I think I मैंने भी उसका T20 आई का देखा था। आई थिंक ही वाज 8.6 ऐसे कुछ जा रहा था स्ट्राइक रेट द इकोनॉमी, Yeah. Yeah. बट इज जनरल हाई, ओके नो डाउट। एंड अभी स्लोली स्टार्ट किया है यॉर्कर कंसिस्टेंटली डालना, बट who else if not him? Is it Mukesh Kumar or Natarajan who was there in the reckoning a few years ago? I don't know who, but I feel that fourth fast bowler right now Siraj, but I'll put an asterisk and say IPL form decides the fourth fast bowler. बहुत बहुत इसीलिए 5 महीने पहले ये करना इज नॉट इजी. आई मीन सिलेक्टर्स के लिए इन जनरल ये करना इज नॉट इजी. बट द लुक तेरा स्क्वाड का अगर मैं लुक देखूं, Hmm. यू नो, तो यू हैव 4 फास्ट बॉलर्स, वन ऑलराउंडर, वन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, सो यू हैव 5 फास्ट बॉलर्स, राइट? यू हैव स्पिनर्स में तेरे पास तेरा 3 स्पिनर्स, राइट? एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, 2 ऑलराउंडर है, एंड देन बैट्समैन, right? So you have 5 fast bowlers, you have 3 spinners, and then the rest. But Mera squad mein, I have 3 fast bowlers, 2 genuine fast bowlers, एक fast bowling all rounder. But मेरे इसमें 4 spinners के option है, right? And I almost feel like कि the venue is also going to play a big role in deciding कि क्या होने वाला है. तो स्कॉट तो चलो पिक कर लिया. वेस्ट इंडीज में है, वेस्ट इंडीज, आई मीन वेस्ट इंडीज, इफ यू गो बैक टू द 80s 70s 80s, फास्ट बॉलर्स वुड, बोलते हैं ना, फास्ट बॉलर्स उधर हल्ला रहता था. आजकल नहीं है, आजकल स्पिनर्स है, राइट? एक एक रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इधर से, डू यू थिंक द वर्ल्ड कप का टेलीकास्ट, मतलब प्लेइंग टाइम क्या होगा, राइट? टिपिकली T20 स्टार्ट्स एट 7:38 इन द इवनिंग, राइट? अब यूएस में है और इंडिया में है. अगर शाम को 7 बजे चालू करोगे तो इंडिया में टेलीकास्ट हो रहा है ये अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? सो डू यू थिंक ये लोग इवनिंग में रखेंगे या यूएस, नॉर्थ अमेरिका यूएस टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग, 8, 8:30, 9, 9, 9:30, 10, whatever, so that India may हो? I'll tell you why I'm asking you that question, but what do you think about that? um ये सोचा ही नहीं मैंने। तो जनरली आई थिंक because the match, the primary country is Caribbean, West Indies and US also. What time, if at all it's 7:30 Caribbean time, India का क्या टाइम रहेगा उधर सब? सुबह का, हम्म राइट? तो वो क्वेश्चन वही है ना कि what do you think, 7:30 चालू करेंगे या सुबह को 9:30 बजे चालू? हम्म I, I think first of all the preference goes to the country where it is being played in. उनके condition ये करेंगे so शाम के बराबर. 7:30 US time. But India is such a revenue generator. 70% of the revenue comes from India. It is tempting not to do this. That is just to Indian timings. So करेक्ट. I think they'll do a mix of both in the sense that कि Indian time, especially India Pakistan, I think will, I don't know ये floodlights डालेंगे कि नहीं ये इसके स्टेडियम पे, so don't know, but I think
mostly US and Caribbean time मेरे को लगता है, and Indian matches they'll try to put it in Indian because we have to cater to the 70-80% of the revenue generating audience. करेक्ट. अब नाउ ये रिलेटेड क्वेश्चन मैं यही इसीलिए मैं ये पूछा कि अगर यहाँ पे यू लुक एट द पिचेस, डोसाइल पिचेस, लाइक फ्लैट पिचेस, सुबह को 9:30 बजे अगर मैच चालू होती है, फास्ट बॉलर का क्या इम्पैक्ट होगा एक T20 मैच? क्या व्हाई डू यू नीड? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देख, यू नो, सुबह का 9:30 का मैच है, यू नो, होता है सुबह को स्विंग होती है बॉल, राइट? देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ड्यू, तो स्विंग हो सकती है बॉल, ऐसा नहीं है नहीं है, राइट? बट यू आर टॉकिंग अबाउट जून, गर्मी कितनी होती है अपने को पता है यहाँ पे, राइट? तो मेरे को लगता है कि अगर सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैच चालू होती है, राइट, इंडिया की मैचेस ना कोई भी मैचेस हो, फास्ट बॉलर्स को स्पेशली T20 में फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद नहीं मिलने वाली है. वो स्पिनर्स, यू नो, टॉस फिर आ जाता है, स्पिनर्स को मदद मिल सकती है सुबह सुबह भी, न्यू बॉल से भी, बट यहाँ के पिचेस डिफाइन करेंगे वो सब. तो दैट इज पार्ट ऑफ द रीजन आई एक्चुअली डिडंट पिक, यू नो, इतने फास्ट बॉलर्स, 5 फास्ट बॉलर्स. तो इसलिए मैंने 3 पे रखा है, क्योंकि अगर स्पिनर्स को, अगर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, जसप्रीत और अर्शदीप ओपन कर सकते हैं, वो दे कैन एक्सट्रैक्ट व्हाटएवर. और अर्शदीप इज द लेफ्ट आर्म, राइट? तो एक राइटी लेफ्टी वहां पे भी कॉम्बिनेशन है. बट दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कनेक्ट दीज टू थिंग्स कि भाई अगर सुबह 9:30 बजे मैच चालू होती है, फ्लड लाइट्स के अंदर, शामी जो तू एग्जांपल दे रहा है, फ्लड लाइट्स के अंदर है, फ्लड लाइट्स के अंदर वी नो बॉल स्विंग होती है, घूमती है बॉल, बट सुबह को नहीं होगा वो. हाँ, नो सही बात है कि अगेन सी आई मेरे को इतना नहीं पता है, आई हैव सीन स्पेशली वानखेड़े में बोलते हैं कि फ्लड लाइट्स पे अंदर बहुत स्विंग होता है, ओके, और बट सम सेमीफाइनल देखने गया था मैं, हाँ मैंने देखा. एंड व्हिच वन द जिसने कोहली सेंचुरी मारा वो, हाँ हाँ, वर्ल्ड कप ओह ओके, सेमीफाइनल देखने गया था मैं. इंडिया न्यूजीलैंड, ओह ओके. इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया न्यूजीलैंड. So yeah, so that वो एक है, and some stadiums have seen कि यार morning 8:30 9 o'clock खेलते हैं, तो it's still sun is not completely out, it swings then, but करेक्ट. I do not know enough कि यार is it depending on stadium, wind, breeze, ocean, ये वो पता नहीं मेरे को, but I agree कि यार under lights generally ज़्यादा swing होता है, especially if you compare under lights versus 10 a.m. in the morning where the lights are at least proper, right? It's not early morning fog and all that, right? So then I करेक्ट. agree. But मेरा ये था कि यार for me to play uh, uh, in your squad there are four spinners right now. Sorry, four spinners right now, right? हाँ. I don't see more than two spinners playing मेरे हिसाब से, because या. one Jadeja will play, second Kuldeep will play, okay. करेक्ट. Then in your squad either Akshar or Bisnoy. Even there I see Akshar playing above Bisnoy क्योंकि Akshar can bat, and बरोबर. he stops at number 7, and some number 7 Jadeja, right, and number 8 पे suddenly tail start आता है, right, and बरोबर. if you have a batsman nobody to support, so अगर spinner बरोबर. तो अक्षर खेलेगा, and Bisnoy अगर जाएगा तो भी I don't think he'll play there as much, मेरे को ये है. करेक्ट. And tell 5 fast bowlers, I'll again Hardik अभी लास्ट 2 साल में मेरे को प्रूव नहीं किया कि वो 4 overs देता है, राइट, सो आई स्टिल नॉट काउंट हिम एज अ फुल बॉलर, सो आई हैव 4 अच्छा. bowlers in my squad, of which 3 I sure will play. मेरे को लगता है कि 3 खेलेंगे खेलेंगे, बट अगेन विल सी. 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे. 3 फास्ट बॉलर्स खेलेंगे आउटसाइड ऑफ हार्दिक. हार्दिक. हाँ, ओके. दैट इज कौन, बुमराह, अर्शदीप एंड शामी मेरे हिसाब से. But that's my thinking. But I agree कि यार West Indies is not that lethal fast like Perth, what it is right now and all that मेरे को याद है. But depends on the stadium dimensions. You can't have spinners bowling every time, and spinners को करेक्ट. unless you're super accurate spinner, मुश्किल है. It's not like a spinning ground also, right? It's slow and low generally West Indies में, so it's tempting to play this one extra spinner, but in my books if you're an extra spinner it will be Akshar, and I don't see Bisnoy playing. On that note, Kamal, you I have a question for you. बोलना भाई. Is कि यार अगर तू एक्स्ट्रा स्पिनर लेता भी है, बिश्नोई क्यों, why not the forgotten guy Chahal?
चाहल चाहल एक 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 ईयर पहले ऑरेंज कैप विनर था आईपीएल में, and he's not performed badly last year as well. And suddenly he stopped getting favors. Looks like from the Indian management. I don't know what's going. Very likable guy, Absolutely. performs well, does his best. He's again. Like I said, I follow RCB. He's been a RCB boy for a long time, and in that small छोड़ दिया stadium like तुमने उसको बेचारे को। Chinnaswamy, he used to ball, तो right? तुम So why एक not? मिनट, तुम आरसीबी वालों ने एक तो उसको बेचारे को निकाल दिया, धोखा दिया उसको। ही वाज Ah, एक्सपेक्टिंग टू yeah. बी रिटेन, तुमने उसको। So sad story. हाँ नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू वो चिन्ना स्वामी का यार स्टोरी, प्लीज कंटिन्यू दैट। नहीं नहीं नहीं, व्हाट आई सेइंग इज कि चिन्नास्वामी इतना स्मॉल स्टेडियम है एंड उसमें भी उसने ही वाज द गो टू स्पिनर फॉर विराट। कोई नहीं विकेट करेक्ट, लेता था तो चाहल कम्स एंड जस्ट नॉक्स ऑफ somebody, right? And बिल्कुल। on an average I think he'll get 1.5 wickets every match, वो average या था उसका। And I think he has got करेक्ट, 180 wickets in IPL and one of the top wicket takers in IPL history. या So या why has he been forgotten? क्या क्या किया है उसने, यार, क्या नहीं किया है? आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बोलते हैं ना कि इतना टैलेंट आईपीएल की वजह से ऊपर आया है ना, कि आखिर किसको लेके किसको ले। बिश्नोई, राइट, बिश्नोई के फेवर में आई मीन दो एक आई गेस एक दो चीजें आ रही है कि एक तो बिश्नोई लेग स्पिनर मत बोल यार, बिश्नोई को। बिश्नोई इज अ रॉन्ग वन। Googly. Yeah. वो बेसिकली गूगली डालता है। इट्स 70-80% उसका गूगली है। एक तारा तो डाला। तो आई गेस T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है उसको खेलने में, राइट, बट ही इज अ गन फील्डर, राइट। आई आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल पॉइंट, बट आई गेस T20 में मायने रखता है यार, कि बिश्नोई बहुत अच्छा फील्डर है। एंड यू आर राइट, आई मीन ऐसे ऐसे देखेगा तो बहुत लोग हैं यार, ऋतुराज गायकवाड़, वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू अदर प्लेयर्स हु नियरली मिस्ड आउट। ऐसे आई थिंक इंडिया को आईपीएल की वजह से वी आर इनटू दैट जोन प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में, कि देर आर इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, इतना ऑफ अच्छे फॉर्म में है, बट लेके तो 16 ही जाओगे ना यार, उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते। खिलाओगे तो Easily. 11। अब इंडिया आईसीसी परमिट करे तो इंडिया वर्ल्ड कप में भी 2 टीम डाल सकता है यार, आराम से डाल सकता है, और दोनों टीम अच्छी परफॉर्म करेगी, बट नहीं हो सकता ना वो। इंडिया, तूने देखा है ना, इंडिया एक कंट्री में टेस्ट मैच खेल रहा है, वहीं पे उधर एक स्क्वाड भेज दिया, टीम भेज नेपाल दिया, में T20 भी खेल रहा है। T20 भी खेल रहा है यार, एक दिन इधर टेस्ट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच खत्म हुआ, नेक्स्ट दिन उधर T20 चालू हो गया। बट यू कैन हैव अ सेपरेट टीम ऑलमोस्ट प्लेइंग एट द सेम टाइम ऑल्सो। ये आईपीएल की वजह से हुआ है ये। बट यार चहल, आई डोंट नो कि अचानक क्या हो गया कि पूरा बेचारा आउट ऑफ द पिक्चर चला गया। बट हाल फिलहाल लोग इसको बैक कर रहे हैं रवि बिश्नोई को। तो आई मीन उसी की वजह से मैंने उसको पिक किया है। देयर इज नो अदर रीजन कि एक्चुअली रवि बिश्नोई और चहल के बीच में, आई थिंक आई अग्री विथ यू, चहल इज मोर टैलेंटेड, एक्सपीरियंस है बंदे में, प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने। एंड उसका अगर तू देखा, ही एक्चुअली कैन बॉल स्लोअर थ्रू द एयर एंड डिसीव या अ बैट्समैन। मेरे पास इसका जवाब नहीं है भाई, क्योंकि आई डोंट नो या व्हाई, या बट दैट इज व्हाट इट इज, या राइट। या but it's a problem of plenty as you said, but इंडिया में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बॉलर्स को होता है, नॉट बैट्समैन को, बिकॉज इफ कोहली, राइट, इफ his form goes from a little dip in form, we can't drop him that easily like we are dropping Chahal, बराबर right? है। But Chahal को पता नहीं why, I don't, there is no clear answer why people are not, I'm sure there are valid reasons. These are not people who are मतलब सोच के किया होगा, बट आई होप ही हैज अ बहुत बढ़िया आईपीएल एंड ही या नॉक्स द डोर ऑफ द सिलेक्टर्स एंड से कि यार मैं भी हूँ, एंड बिल्कुल एंड आई होप ही, बिकॉज लाइक जैसे तूने बताया कि यार अगर बिश्नोई ना 100 पे डालता है, 100 किलोमीटर पर आवर पे डालता है, राइट, करेक्ट। इज नॉट गुगली मेनली डालता है। अभी देख रहा था इंडिया अफगानिस्तान, आई थिंक इनको समझ आ गया है डेटा एनालिटिक्स से कि यार 70% योर गूगली गुगली डालना। आने वाला है। सब लोग, वो नबी ने उसको दिया 4-5 एक ओवर में, सब कव कॉर्नर के ऊपर, कोई उसको कवर्स के ऊपर मार ही नहीं रहा है क्योंकि लेग स्पिन डाल ही नहीं रहा है।
सिर्फ बराबर। गूगली डाल रहा है तो बैठ के ऐसे ये कर रहा है, राइट? तो भले तू लेग का कार्ड लिया है, तू बॉल डाल रहा है, जब वो रनअप ले रहा है तो ऑफ पे आके उठा के दे, अंदर ही देख आने वाला ना। देख अभी वही है। 30 टेस्ट मैच का याद आया ना हमको कि टेक्निक में कैसे खेलते। काम आ रहा है, टेस्ट मैच खेलने से याद आया, मतलब काम आ रहा है, बता रहा था ना मैं। But yeah, I think let's see. It's a problem of plenty. I think that's the right answer. But मेरे को भी जैसे I have the same thing of Siraj to some extent, or maybe Shami, Correct. where I feel that he will get favored, and it is hard to bring data points here. Why him? बराबर। Where I feel here he will be selected because of the hangover of हम्म। World Cup या वर्ल्ड अलग कप। performances या या चल यार पीपी, ये तो अभी स्क्वाड तो अपना दोनों का स्क्वाड इज रेडी, राइट? लास्ट एक दो चीजें फटाफट विल टॉक अबाउट इट। वन इज, यू नो आसान नहीं था। आई एम श्योर देयर वर पीपल, लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट पीपल हु मिस्ड आउट, राइट? हु, तेरे इसमें कौन थे यार दो तीन लोग जो लाइक यू वर लाइक डिबेटिंग ये होने चाहिए, तो दे नियरली मिस्ड आउट? कौन है वो दो तीन लोग तेरे इसमें? मैं फोन में देख रहा हूँ, मैंने तो लिखा था एक तो नेम्स, मेरे को एक हम्म। मिनट दे। हाँ हाँ, तो मैं बताता हूँ, चल तेरे को मैं हाँ मेरा बता बता। बता देता हूँ तेरे हाँ को। हाँ बता। राइट, मेरे दो तीन लोग हैं एक्चुअली। एक तो मुकेश कुमार है, राइट? देख रहे हैं हम मुकेश कुमार, स्पेशली डेथ ओवर्स में इज डूइंग रियली वेल, राइट? बट अगेन कितने लोग लेके जाओगे यार? आखिर आखिर किस किस को लेके जाओगे, राइट? तो एक मुकेश कुमार मिसेज आउट, क्लोज ईशान किशन। हमने डिटेल में डिस्कस किया जितेश कुमार वर्सेस, बट ईशान किशन मिसेज आउट, राइट? तीसरा ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में मैं काफी सोच रहा था, बट कुछ चीजें जो यशस्वी के जाती है, ऑब्वियसली रिसेंटली बोलते हैं ना टीम मैनेजमेंट की नजर में है वो बंदा, बट ऋतुराज गायकवाड़ टेक्निकली साउंड है, अच्छा प्लेयर है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है। बट वो ये तीन मेरे प्लेयर है जो दैट आई एक्चुअली डिबेटेड। बट ईशान किशन तो मैं तो फ्रैंकली बोलूं मेरे स्क्वाड में था, बट तूने जो पॉइंट किया तो आई बेसिकली रिमूव्ड ईशान किशन। तो ये मेरा मुकेश कुमार, ईशान किशन एंड ऋतुराज गायकवाड़ है यार। ये तीनों के बारे में मैंने काफी सोचा, बट देन आई जस्ट कुडंट फिट देम इन। बट या मेरा, इफ आई गो अबाउट माइन, मुकेश आई थिंक लास्ट 2-3 महीने में ही इज बॉलिंग रियली वेल, एंड उसके आईपीएल परफॉर्मेंस पे भी उसको सिलेक्ट शायद किया जाएगा, शामी या हाँ। नॉट शामी बट सिराज के अहेड मोस्टली, डिपेंड्स ऑन हाउ हम्म। हिज आईपीएल गोस। सो करेक्ट। मुकेश इज वन। Second, for me is Tilak Verma, जो मेरे स्क्वाड में नहीं था, and करेक्ट। he is the second one. I think again, I hope it doesn't have a good uh, IPL because I'm not a Mumbai fan. But jokes apart, वो second है मेरा. Third is we did not discuss if Pant comes back and plays अरे। really well in IPL, right? वो captain भी है. If he हाँ। performs really well, who knows, because we said हमने बोला था कि यार कोई तो नो कीपर ऑफ इंडिया इज हम्म। इतना अच्छा बैटिंग करता है, मतलब टी20 में परफॉर्मेंस हम्म। नहीं है, तो पंत माइट बी थर्ड वन. I had a fourth हम्म। one as well, which is again बोल बोल। has not got strong performances, but Shreyas Iyer. श्रेयस अय्यर इंजरी था और केकेआर के लिए लास्ट सीजन नहीं खेला, कैप्टन भी था लेकिन ही डिड नॉट प्ले। तो बट मेरे को लगता है वो एग्रेसिव बंदा है, टी20 के लिए बनाया है, मतलब हाँ। आके बिल्कुल। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कैप्टन एंड अ टॉप प्लेयर, वो जाके ज्यादा सोचता नहीं है, दो तीन बॉल में आके फटफुट मारता है वो, राइट? तो which is required when you have someone like Kohli, Gill, Rohit अभी aggressive हो गया, but these are like the senior statesmen, right? जो सब करेक्ट। करेंगे. So we need somebody like, करेक्ट। but I don't think there is a slot for him in these 15, but he's another guy who missed out, I feel. हम्म। So Shreyas Iyer, Mukesh Kumar, Pant, and then Tilak Verma. Correct. Correct. Okay. Pant is a interesting case. Obviously, जो उसके साथ हुआ है, which was horrible. Hopefully, he
होपफुली आईपीएल में हम देखेंगे उसको कम बैक करते हुए। उसके काफी वीडियोस देख रहे हैं हम। ही इज ऑन द रोड टू रिकवरी, एंड आईपीएल में फीचर हो, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं होगी। टैलेंटेड बंदा है, कोई डाउट नहीं है। बट आई थिंक T20 में वो ना कोशिश कर रहा है अपनी गेम समझने की। अम, वो कहीं अटक गया है कि मैं एग्रेसिव खेलूं कि मैं कैप्टन हूं, संभल के खेलूं। वो आई थिंक उसमें वो अटका है कहीं ना कहीं। सो अपार्ट फ्रॉम जो उसके साथ हुआ है इंजरी और ये सब, कीपिंग में कोई डाउट नहीं है, राइट। बट आई फील लाइक T20 में अभी तक यू नो वनडे टेस्ट मैचेस में कोई कोई उसका यू नो एक बार रिकवरी हो जाती है, फॉर्म में अच्छा आ जाता है, ऑब्वियस चॉइस है टेस्ट मैचेस के लिए खास करके, राइट। बट T20 में वो आई थिंक अपनी गेम अभी तक समझ नहीं पाया है। थोड़े टाइम में वो भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। सो आई थिंक इस वर्ल्ड कप के लिए इसीलिए मैंने पंत के बारे में सोचा ही नहीं। बट कहाँ फिट करेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीजें थी। बट मे बी यू नो ये जो भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ, नाउ ही बेसिकली कम्स बैक एंड प्लेज केयर फ्री। खेल भाई, सेकंड लाइफ है, गो एंड एंजॉय। आई होप ऐसा खेले। देन हु नोज यार, जैसे अश्विन को लास्ट मिनट में वर्ल्ड कप में लेके आए, यू नेवर नो, करेक्ट, ऐसे एक दो भी आ सकते हैं यार। करेक्ट, करेक्ट। खैर पीपी, ये तो अपना पूरा डिस्कशन हो गया। स्क्वाड के बारे में बात कर ली, पीपल हु मिस्ड आउट, यू नो आईपीएल के बारे में थोड़ा बहुत बात कर ली। सो आई थिंक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है इस एपिसोड के लिए। एनी लास्ट वर्ड्स पीपी? मजा आया? कैसा था? इंटरेस्टिंग था? मजा आया कमल, तेरे को कमली बुलाते हुए रिकॉर्डिंग में, तो पहले मजा आया। पता भी नहीं चला 1 घंटा हुआ है। एक घंटा हो पता भी नहीं चला कि यार दैट्स व्हाट हैपेंस, क्या क्रिकेट के बारे में बात करते हैं ऐसे कि यार हम लोग ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे तो भी ये सब डिस्कस कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। तो इट वाज नेचुरल एक्सटेंशन। और गया। कभी बराबर। हमेशा मजा आता है। तो बट थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत मजा आया। मेरा हिंदी इज नॉट रियली गुड, दैट्स व्हाई मैं इंग्लिश मिक्स करता रहता हूँ, सो अरे अपोलोजाइज टू यू एंड योर टेंशन, ऑडियंस। अरे मेरा ऑडियंस तू ही है भाई, कोई टेंशन नहीं लेने का यार, बात करो बिंदास। हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, वो टेंशन नहीं लेने का। बट एनीवेज, पीपी थैंक यू। होपफुली हम और रिकॉर्डिंग करेंगे यार, बट आज के लिए शुक्रिया, एंड फिर मिलेंगे। थैंक्स पीपी, बाय।